Good morning, sir. Good morning, Mr. Divyansh. How are you? Yes, sir. Very good, sir. So, Mr. Divyansh, tell me about yourself in brief. Yes, sir. My name is DIVYANSH MEEENA. I am from Jaipur, Rajasthan. I'm currently in the Indian Revenue Service 2023 batch. I'm currently in the training here at NEDT. We started about 2 months back. My hobbies include cricket, video editing, and apart from the hobbies, this is my sixth attempt and third interview in the UPSC. Sixth attempt and third interview. Okay, good. So, Mr. Divyansh, what does Divyansh mean? So, sir, the name is this basically means that this is a combination of Divya plus Ansh, which means something which is part of something good. Good. So, you are part of something good? Yes, sir. Okay, good. What do you know about Jal Mahal? Sir, it's a How lake. many floors are there in Jal Mahal? Sir, I'm not aware about the exact number of floors in the building there. No problem. So, what is Jal Mahal? Sir, it's a lake which was built in 1799, mainly for the aesthetic purpose. It's currently a tourist destination there in the Jaipur, where it's quite easily linked to Amer and other forts there. Okay. So, who built it? Sorry, sir, I'm not able to recall the exact name right now. Okay. Savai Pratap Singh, something like that. Can you recall? No. Okay. Related with your state, Waterman of India. Who is known as Waterman of India? Sir, I'm not able to recall the name right now. Sorry, sir. Anyway, Mr. Rajendra Singh, can you recall now? Yes, sir. So, what recognition was given to him, Rajendra Singh, related with the water conservation? Sir, actually, in the district of Alwar, to fight the water scarcity issues, he helped in water harvesting using local techniques like Bawadis and others. So, any recognition prize given to him? Sir, I'm not aware about such prize. Can you recall Raman Magsaysay Award? Sir, I'm not sure if it was given to him or not. I will have to check. Okay. Which is the largest tax reform carried out in our country since independence? Sir, if we talk about tax reforms, there have been multiple ones. If we have to point out largest, I'm talking about largest tax reform carried out in our country since independence. Sir, point just one, then that would have to be GST reform. GST reform. So, which amendment in the Constitution? Sir, 102nd Constitutional Amendment. Anyway, it is 101st. So, now you tell me, what was the need to have the constitutional amendment in this regard for introduction of GST? Sir, actually, before GST, many of indirect taxes were separately there, and that was leading to problem of taxation, double taxation, tax on tax. Input tax credit was not available. States were taking a separate tax, center was taking separate tax, different states had different rates. So that was leading to problem of multiple taxation, leading to high prices and uncomfort for the businesses as well as the customers. And since it was also the issue of federalism there, because states' rights are also included, so a constitutional amendment had to be done to provide a proper framework for a GST, which would act like a single tax. Okay, under which articles, can you name the articles under which the amendments were made? Amendments were made through this constitutional amendment 101st. So I will have to read what the exact articles actually. Can you recall any of these? In 5 articles, amendments were made. Can you recall any? I think Article 280 is there, which is what GST Council. 280. Sir, exact number I'm not able to recall. Okay, no problem. Should petrol and diesel be brought under the ambit of GST? Sir, I think at the moment we may not be in a position to include petrol and diesel both in GST because of some administrative issues, considering we're importing most of our crude oil from other countries. But in the future, in coming years, if we have a set fit, if we're able to prepare a framework through which we can do that, I think we should try that.
Okay, you play cricket. Yes, sir. What do you know about Shefali Verma? Sir, Have you she is ever heard her name? yes, sir. She is an Indian batter in the Indian women team. She generally opens for India in ODIs and T20s. Okay, has she broken any record of Sachin Tendulkar which he had for 30 years? Sir, I'm not aware about this content. Where from she is? From which state? Sir, I will have to check that. Okay. What do you mean by capital gain? So, sir, whenever someone is holding an asset for a longer term, it may be a monetary asset like a stock or some other financial asset. For a longer term, when it is held and when it is sold, when the profit is actually earned on that value, that's called capital gains. So longer term means how much duration? Sir, it depends. It can be below 1 year or more than 1 year, depending on So for duration. longer term, it can be below 1 year also, or below 1 year short term. Tax rate varies. If it's below 1 year, then there's a different tax rate, and if it's more than 1 year, there's another tax rate. Greenhouse gases effect. What do you mean by geography? Yes, sir. So there are various gases like carbon dioxide, methane, and others, which actually do not allow the outside radiation to go out. So when sun's rays come inside enter the earth, they turn into long wave radiation. But these greenhouse gases do not allow those gases to escape. Those do not allow those rays to escape the Earth's atmosphere, and they increase the temperature on the Earth. This is basically the greenhouse gas effect. Okay, what do you mean by climate clock? Um, Sir, I vaguely recall it. It's a clock at some institute in Rajasthan, at some scientific institution, where which is it's like a time countdown towards the when we are going to achieve the 2 degrees Celsius uh, temperature increase compared to pre-industrial times. Okay, so since pre-industrial time, how much increase in the temperature, global temperature recorded in Sir, the year 2024? sir, as per recent data, about already 1.3 to 1.4 degrees Celsius of temperature 1 hike point. has 1.4 degrees Celsius approximately. That much hike has already been seen. Okay. What is international dateline? Okay, sir, actually, at the 180-degree longitude, it was difficult to draw one simple longitude because it would go across many countries. And at that point, the two hemispheres are divided. So that ideal international dateline is considered as a longitude there, where it is not perfectly in the symmetry. It deviates across some countries to make sure that timeline is maintained. And what about the date towards the east and west of that international dateline? So could you please repeat the question? Date. Is there any change? Is there any change in the date? Yes, yes. East and west? Yes, so from crossing from west to east, the date changes by 1 day. Okay. Makar Sankranti, there is a fixed date, that is the 14th of Jan, but for other Hindu festivals, it is not there, Makar Sankranti, and we call it with different names in different parts of the country. So for that Hindu festival, the date is not changed. So what exactly happens on Makar Sankranti? So I'm not sure about the exact reason the date changes on date does not change on Makar Sankranti. I feel No, that date, I'm not saying date. Date is not changed. That always remains 14th of Jan. yes, sir. There is no change in the date, but for other Hindu festivals, the dates as per calendar that differs from year to year. Be it Holi, be it Diwali, like that. But for Makar Sankranti, it is not. So what exactly happens on Makar Sankranti? Sir, I think for other Hindu festivals, the Hindu calendar is followed, which does not sync with the Georgian calendar. So dates are not same every year. But I think for Makar Sankranti, we are not following the same Hindu calendar. That's why the date is not changing. Okay, what is the difference between All India Service and Central Service?
So there are three All India services: IAS, IPS, and Forest Service. These are basically allocated a specific cadre. So across all the states, there are cadres for these services. So the personnel employed in those services can be employed can work under central government as well as state government, depending on their cadre. On the other hand, in central services, there is one specific cadre, that is central cadre, and they work under the government of India directly. So IAS, IPS, and Indian Forest Service you have named. During British period, IAS was called So Indian Civil Service. Indian Civil Service. And what about Forest? So I will have to read about it. Is it Imperial Forest Service? Sir, I'm not sure about this. What about IPS? Sir, I will have to check this also. Were the civil servants always recruited through competitive examination in our country? Sir, no, actually the open competition started only around 1850s or 1860s. Before that, there was some other mechanism. The open competition came at a later date. And what was that mechanism earlier for recruitment of civil servants? I Sir, see. You can say. Sir, the East India Company made these recruitments, but I'm not aware about how what the mechanism exactly was. Okay. UCC, Uniform Civil Code. Is there any state in the country where it is implemented? Sir, Uttarakhand has actually brought the legislation on this. So And has it come into force? sir, I'm not sure about the date of enforcement yet, but they do have a plan to enforce this. Any other state where it was under implementation, though not exactly in the same form as we expected today, or it has been done in Uttarakhand? Goa is one state which has had UCC for quite a while. Eh? Sir, Which Goa. Goa. So under which court? Goa? Sir, it's under Bombay High Court. So, any amendment in the constitution related with which we can have little conversation, you can opt any constitutional amendment. Any. Okay. From 1st to 106, any, you select any related with which we can have little conversation. Sir, can I have a few seconds to think about it? Sure. Sir, we can have a discussion on 74th Constitutional Amendment Act, which was 74th. So what exactly that was? 74th Amendment in the Constitution? Sir, it actually formalized and constitutionalized the system of Panchayati Raj institutions across Indian villages. So what is the difference between 73rd and 74th? Sir, 73rd is for the Panchayati Raj, 74th is for municipalities. I misspoke actually. Yeah, right. You are. So one thing, the one which you have already stated, what else related with that 74th Amendment in the Constitution? 74th is for the municipalities. It provides the mechanism for town area committees, the municipal boards, the cantonment boards, how their administration would be, how the elections would be held, for what tenure would the seats would there be, how the nominations would be done, and what powers would they have. Anything related with women empowerment in that 74th Amendment in the Constitution? So there is 1/3 of reservation given to women. Would you like to correct yourself 1/3, or would you like to fix before prefix something before 1/3? So I think I will have to read the exact provision in this regard. Okay. So related with the one nation, one election. So what is the update related with this? So there has been a committee under the President Ramnath Kovind, which has actually recommended in favor of this idea of one nation, one election. And government is also supportive of this idea. For that, currently consultations are being done in media and other sectors regarding the implementation of this idea. What in Parliament?
Sir, in Parliament there have been proposals about introducing a bill there. So bill has been introduced? Sir, I will have to actually check when the bill has been introduced on this or not. Okay. Welfare measures and freebies. Now you tell me, providing free food grains to the poor people, approximately 81 crore of the people in the country, would you count in welfare measures or freebies? Sir, it depends. Actually, the way we are providing it, if it is justified under the fiscal deficit, we have the fiscal capacity and it is rationalized considering demands of the people, then it works. If 81 crore people are given free food grains at a reasonable cost, then those people will have additional money left for expenditure on education and their healthcare. In that area, it becomes a welfare measure. But if it goes into those excess parameters, when it is given only for the sake of populism and vote seeking, then it goes into category of the freebies. As of now, I think we are keeping it rationalized. So until now, it is in the welfare measures. Would it not have been a better idea had the food grains been given to the poor people at the subsidized cost, as it was done earlier also, 1 rupee, 2 rupee, and 3 rupees per kg for coarse grains, for wheat, and for rice and pulses? Would that not have been a better idea to provide the food grains at the subsidized cost rather than giving it free? Sir, I think if the state has the fiscal capacity to sustain and manage such initiatives, then the state can go on with this. Since our fiscal deficit is already improving, and we are not giving, we are giving only a limited amount of the food grains, about 5 kg, I think. So till that level, I think it can work. But once we go into excess, it may not work. By what time we are going to have we are going to be the fourth largest economy of the world and third largest economy of the world? By what time do we expect? So various estimates are there. Currently, some estimates project India to become fourth largest by 2030, and different agencies have different estimates. And And then, third largest economy by the year? third largest economy. Fourth and third. I'm talking about both. Fourth largest economy, till when do we expect? And third largest economy, do we expect? So I will have to check the exact numbers of the years. Which agency. Okay, with the current rate of GDP growth, by what time we would be able to be the third largest economy of the world? Or we can say, if we want to become third largest economy of the world by the year 2030, then at what rate GDP growth is required? At present, it is approximately, Um, so I'm this not able year to. expected to be. So it was 8% plus in the previous financial year. Mhm. In current financial year, it has fallen somewhat. This year, we are expecting approximately. 6 to 7%. The expectation is. Okay, so with what growth rate we would be able to be the third largest economy of the world? For Sir, the by years, how much it should be so that we can be the third largest economy by the year 2030? sir, I don't think it would be very pragmatic to become third largest by 2030 because we will have to At what growth rate should be there? Growth rate at what level it should be there to be the third largest economy of the world by the year 2030? Definitely with the current rate between 6 to 7, as we are having this, we are going to have this particular year, we won't be able to achieve. So at what rate, growth rate, it should be there so that we can be the third largest economy of the world? then it would be very high number of the growth expected, which make a I cannot make a guess on that level. Okay, India hydrogen train. India hydrogen train. Have you heard about this particular mission? Sorry, sir, I've not heard about it.
Okay, no problem. Now, Trump 2.0 foreign policy. So what does Trump say related with the foreign policy? Trump 2.0. Yes, sir. So there are various things about his approach in foreign policy. It is supposed to be somewhat more aggressive. First, he is planning to end the war in Ukraine and Russia because the new administration is trying to intervene in the war by by negotiating a ceasefire. Meanwhile, the administration is also going to emphasize and force Europe in some way to increase their defense expenditure. It's also expected that the Trump administration may revive groups like Quad, which may somehow favor India. The aggression with China actually may increase because last time they had this trade war with the China. Further, there may be some issues for countries like India because of the trade wars which are expected, and some additional tariffs may be imposed upon India. Okay, what is the difference between constitutional post and statutory post? So, the statutory post is established under a law of the parliament or legislature, whereas constitutional post is directly provided under the provisions of the constitution. Are the post of Sarpanch and Panch the constitutional post? So, I'm not sure about the technical aspects of this. You told me the difference between constitutional post and the statutory post. Now you tell me whether at all these are constitutional post. Um, sir, Different, whatever you said, that is right. Now my specific question is whether the post of Panch and Sarpanch are the constitutional post. actually, although through 73rd constitutional amendment, the And constitution, both also. but the states have their laws also. So, under which provision from which either constitution or statute it is established, I will have to read about that. Okay. What is the difference between centrally sponsored scheme and central sector scheme? So, a central sector scheme is directly um, financed and implemented by a central government, although they may take the aid of state governments for the implementation. On the other hand, in centrally sponsored scheme, the financing is done by both center and state governments, and the executive part, the implementation part, is generally done by the state governments. Your hobby is endurance running. What Yes, is sir. endurance running? So endurance running is a specific type of running, which is basically a long distance running, typically ranging from 3 to 5 kilometers to even longer distances. What is FTA? And you tell me with which countries we have signed FTA during past say about 4 years or so, which have become operational, and with which countries or group of countries we are going to sign FTA within a year or so. Sir, FTA is a free trade agreement. Mm-hmm. Under this, two countries promise to or negotiate and come on an agreement to reduce various tariffs, provide trade concessions to each other, so trade can be boosted. We have signed FTA with countries like UAE in the recent past. We are, UAE and sir, UAE and I'm not able to recall more names right now. The countries with which we have signed. okay. With But which countries we are going to sign soon? we are negotiating FTA with Europe for now, EU for now, and Europe and I'm not able to recall more names right now of the other countries. okay. Right. So now your interview is over. You tell me, how do you rate yourself? Good, very good, outstanding, what? Sir, I'm like, it was my first mock interview. I think I was very underprepared for this. Like, that's what I felt, at least personally. So good, very good, outstanding. Sir, I think it's barely good if I have to. It was not very good, at least. Anyway, it was very good, but it has to be outstanding to be doubly sure that you are in. Sir, तो लास्ट ईयर आपको कितना मार्क्स मिला? last time I had 193.
193। आज का भी परफॉर्मेंस आपका अच्छा है और वो भी इसी के आसपास है। लेकिन किस में मार्क्स कम रहे, रिटर्न में? सर एक्चुअली मेरा जो ऑप्शनल था वो पूरा ब्लेंडर हो गया था, क्योंकि मेरा कॉपी फट गई थी वहाँ पे पिछली बार। तो कट गई? सर वो फटी हुई कॉपी आई थी, और तो फिर मैंने कि रिप्लेस कर दो, उन लोगों ने रिप्लेस नहीं करी, मुझे उसमें लिखना पड़ा, और तो उसको सही करने के अंदर मेरा काफ़ी टाइम चला गया था। बताइए, सो सैड। एनीवे, इस बार अच्छा हुआ है। सर पेपर तो मेंस तो अच्छा हुआ था, बट आज का परफॉर्मेंस आपका इसी के आसपास है, जैसा आपको मार्क्स मिले। थोड़ा सा और बेटर करना है। व्हेन इज योर इंटरव्यू? 17 फरवरी को है। है सर 17 फरवरी। 17 फरवरी, तो अभी टाइम है, मोर देन 3 वीक्स। यस तो सर। आप क्या करेंगे? हालांकि आप तो जानते ही हैं, यू विल आइडेंटिफाई द प्रोबेबल क्वेश्चंस फ्रॉम योर डेफ, स्टार्टिंग फ्रॉम योर नेम, हॉबी यस सर। हो, चाहे आपका क्वालिफिकेशंस आपके हों, चाहे आपका ऑप्शनल हो, चाहे आपका स्टेट हो, along with current affairs, and you have to prepare them well. अच्छा, आपका, अब देखिए, क्वालिटीज विच आर रिक्वायर्ड टू बी ए गुड सिविल सर्वेंट आप जानते ही हैं। ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, मेरे ख्याल से आपने गलत जवाब शायद नहीं दिया है कहीं दिया? सर वो 74th जो अमेंडमेंट। हाँ, वो तो बाई चांस, देखिए, आप उसको जानबूझ के आपने गलती नहीं की होगी, वैसे आप बोल गए होंगे, ये हो सकता है। लेकिन फिर भी ध्यान रखना है कि थोड़ा सा, क्योंकि आप ही ने सेलेक्ट किया है वो, यस सर। है ना? तो आपकी के सिलेक्शन में तो कमी नहीं रहनी चाहिए। हाँ, वो आपने सही कहा कि वहां गलती की थी। तो नो रॉन्ग आंसर एट एनी कॉस्ट। अगर आप 80-90% श्योर हैं, देन यू कैन से सर आई एम नॉट वेरी मच श्योर, इट इज लाइक दिस। ऐसे आप कह सकते हैं। आई कैन गैस, कैन आई गैस मत कहना, बात एक ही है। यस सर। कैन आई मेक एन अटेम्प्ट और कैन आई गैस एक ही बात है, सही पूछिए तो। लेकिन वो अच्छा नहीं लगता गैस गैस कहना। कैन आई गैस ना, कैन आई मेक एन अटेम्प्ट दो आई एम नॉट वेरी मच श्योर, ऐसा जगह ये करते हैं। यस। अच्छा, आपका तो ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, एक्सेप्ट फॉर दैट, वो रिफ्लेक्ट हो रही है। कन्वर्सेशन, देयर इज नो प्रॉब्लम, बड़ा अच्छा है। प्रिसाइज एंड कॉन्साइज भी, एक किसी आंसर में आप थोड़ा सा डिटेल में चले गए थे, बिल्कुल उतना ही जवाब दीजिए। कौन सा याद नहीं रहा मुझे, मैंने कहा आपको बताऊंगा, मैं भूल गया कि कौन सा था। तो ये बात है। अब राजेंद्र सिंह के बारे में मैंने आपसे पूछा था, है ना? यस तो सर। वाटरमैन ऑफ इंडिया उसको उनको कहते हैं। और उन्होंने क्या क्या उनको मिला? रमन मैगसेसे अवार्ड और स्टॉकहोम वाटर प्राइज। स्टॉकहोम वाटर प्राइज है, दो मिले उनको, मेन रिकॉग्निशन ये दो है। जल महल, क्योंकि आपका जल महल से ही है, जल महल का पता होना चाहिए। देखिए, ये शायद स्वामी प्रताप से, स्वामी नहीं, सवाई प्रताप सिंह ने शायद बनवाया होगा। यस सवाई सर। प्रताप सिंह, और उसके 3-4 फ्लोर सबमर्ज्ड हैं और एक बाहर से दिखाई देती है। देखना और डिटेल में इसके बारे में, क्योंकि आपको उसी से है, कोई और नहीं बताएगा। राजस्थान का कैंडिडेट कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा जल महल, लेकिन क्या क्या आपने जल महल लिखा हुआ है इसलिए। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, वो 102 आपने बता दिया। 102 तो रिलेटेड है बैकवर्ड कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने का। यस सर। 101 है जीएसटी से रिलेटेड। और वो जो जीएसटी से रिलेटेड है उसमें जो 5 ये हैं आपके आर्टिकल, जिसमें कि ये क्योंकि आप रेवेन्यू इसमें सर्विस में ऑलरेडी सेलेक्ट हो रखे हैं, तो वो 5 आर्टिकल में है, जिसमें से 280 नहीं है, वो कौन जीएसटी काउंसिल का 279 में ए ऐड किया गया उसके लिए। ठीक है, तो यस सर। 281 आपने वहां गलती कर दी। कोई बात नहीं, नहीं याद, नहीं याद सारा चीज आप मुझसे पूछेंगे, मैं कितने बता पाऊंगा, हो सकता है 50% ना बता पाऊं। ठीक है, तो लेकिन गलत नहीं, किसी भी कॉस्ट पे दूसरी गलती होती कि वो है 279 जिसमें ए ऐड किया गया। इसके अलावा 4 और आर्टिकल थे, 246A, 269A, 266, 366। तो क्योंकि आप रेवेन्यू सर्विस में ही है, इसलिए आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। यस सर। है, तो कन्वर्सेशन कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, बाय एंड लार्ज इट वाज रिफ्लेक्टेड। नहीं कहना ज्यादा अच्छा है गलत आंसर देने से, ये ध्यान रखना है। यस सर। आपके आंसर प्रिसाइज एंड कॉन्साइज थे मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे, और एक आधी जगह कहीं थोड़ा सा
ज्यादा हो रहा था। मैंने सोचा आपको बताऊंगा, मैं भूल गया। एनीवे, जहाँ पे एक आधी जगह ही था, कोई खास नहीं। जो आपका बजट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट है वो आप जानते ही हैं, 31 से शुरू हो रहा है जैन से, और 13 फरवरी तक चलेगा। वो पहला फेज होगा, उसके बाद में फिर दूसरा फेज मार्च से शुरू होगा। ठीक है। उसमें इनकम टैक्स अमेंडमेंट से रिलेटेड बिल पेश किया जाएगा। उसके जो सैलियंट फीचर्स बढ़िया से देख लीजिए क्या होंगे उसमें चीजें। मेन एक तो सिंपलीफाई किया जाएगा, एक जो रिडंडेंट सेक्शंस है, रिडंडेंट प्रोविजन है, उसको खत्म किया जाएगा, और यस वो सर। ज्यादा पीपल फ्रेंडली बनाया जाएगा। अभी तो ब्रॉडली जो आ रहा है फाइनेंस मिनिस्टर का, वो इसी चीज से रिलेटेड आ रहा है। बाकी आपके टाइम तक तो जब तक पेश भी हो जाएगा, है ना, बिल भी पेश हो जाएगा, और फर्स्ट फेज में ही हो जाएगा, सेकंड तक वो वेट नहीं करेगा। फर्स्ट फेज आपके इंटरव्यू से पहले ही खत्म। ठीक है। तो ये हुआ। और आपका क्वेश्चन था क्या क्या था, एक दो जगह और मैं बताना चाह, हाँ, एफटीए देखना, ऑस्ट्रेलिया और यूएई के साथ, है ना। और उसका यस। एग्जैक्ट नाम याद कर लेना एफटीए का, जो कि इनके साथ किया गया है। और कंट्रीज जिससे हम करने जा रहे हैं, यूके तो है ही, यूरोपियन यूनियन भी है, और भी कुछ कुछ कंट्री हैं, दो तीन कंट्री और हैं जिनसे हम साइन करने जा रहे हैं। अब आ जाइए यूसीसी गोवा। गोवा में जो हो रहा है यूसीसी, वो जो वो पोर्चुगीज कोड के अंदर है, पोर्चुगीज कोड, पोर्चुगीज, है ना। और दैट यस। इज समवॉट डिफरेंट देन द यूसीसी विच इज रिलेटेड विद उत्तराखंड। अब उत्तराखंड में इंप्लीमेंट हुआ कि नहीं हुआ, दामी जी कहते थे कि ये जनवरी 2025 से हम इंप्लीमेंट कर देंगे। तो जनवरी 2025 में फिर बात आई मकर संक्रांति से इंप्लीमेंट कर देंगे। अब ये देखना कि ये इंप्लीमेंट हो गया है कि नहीं हो गया। आई एम नॉट वेरी मच श्योर अबाउट दिस, दिस हैज टू बी सीन। पहले वो उनका कहना था कि जनवरी, प्रेसिडेंट असेंट बहुत दिनों की मिल चुकी है, यू नो, यस सर। प्रेसिडेंट असेंट मिले हुए भी कुछ महीने हो गए हैं। तो इनका ये था कि 2025 जैन से हम इंप्लीमेंट करेंगे। अब वो इंप्लीमेंट हुआ है कि नहीं हुआ, इसमें मुझे भी थोड़ा सा डाउट है। अच्छा, अब आया आपका वो वन थर्ड रिजर्वेशन, किसमें, 74th 73rd अमेंडमेंट में फॉर वीमेन। वो वन थर्ड नहीं है, एटलीस्ट वन थर्ड है, यस एटलीस्ट सर। वन थर्ड है ना। कहीं कहीं स्टेट में 50% भी किया है। अब आपका सवाल था कि मैं इसे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट कहूं कि नहीं कहूं। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, लेकिन उसमें कुछ कुछ स्टेट प्रोविजन है, जैसे कि स्टेट कितने एटलीस्ट है, तो 33% करे, 40% करे, 50% करे, वो स्टेट का मामला हो गया। बट इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है ना। आपने ही कहा था। तो ये जो आपने कहा था वो ठीक था कि कॉन्स्टिट्यूशन में जिसका एक्ट में प्रोविजन है वो स्टैट्यूटरी पोस्ट होगी, जिसका कॉन्स्टिट्यूशन सेल्फ में प्रोविजन है वो कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट होगी। तो वो एटलीस्ट वन थर्ड है। 106 अमेंडमेंट में अगर आप देखेंगे वीमेन का जो रिजर्वेशन लोकसभा में, ये देखेंगे लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, और यूनियन टेरिटरीज जहां पे कि असेंबली एग्जिस्ट करती है, वहां पे वो वन थर्ड है, वहां पे एटलीस्ट वन थर्ड नहीं है। लेकिन 73rd 74th में क्या है, एटलीस्ट वन थर्ड, जो कि घट तो नहीं सकती, एटलीस्ट बढ़ सकती है, 50% तक भी कई स्टेट में है। और वो स्टेट की पावर में, स्टेट की उसमें आती है लेजिस्लेशन में। ठीक है, यस क्लियर। सर। अच्छा, और क्या था आपका, ये शेफाली वर्मा के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि आप क्रिकेट से रखते हैं, और वो रोहतक हरियाणा के रहने वाले हैं, और 30 years रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर का उन्होंने ब्रेक किया है। तो वो एक अच्छा ये है। ये, और ये जो मैंने शायद आपने इंडिया हाइड्रोजन ट्रेन के बारे में पूछा था, है ना। यस सर। इंडिया हाइड्रोजन ट्रेन, ये पहली हाइड्रोजन ट्रेन होगी, और ये जिंद से सोनीपत के बीच में होगी। और ये जो अभी तक 4 ही कंट्री इसको कर पाए हैं हाइड्रोजन ट्रेन को, हमारा 5वां कंट्री होगा। और हमारा जो इंजन होगा वो औरों से ज्यादा पावरफुल होगा। जिंद हरियाणा के बीच
कौन सी? इंडिया हाइड्रोजन ट्रेन। ठीक है, ये हो गया। और आपका क्या था? मैंने, हाँ, एक था कि क्लाइमेट क्लॉक। Climate clock is the clock which tells us that how much time is left to breach the target of rise of 1.5 degrees Celsius temperature since the pre-industrial era. तो वो हमारा 1.55 हो गया है 2024 में। तो क्लाइमेट क्लॉक समझ गए। यस सर। और आप क्योंकि ज्योग्राफी से हैं, तो केवल अकेला प्लेस जो इंडिया में है जो कि कार्बन न्यूट्रल है वो पल्ली है, जम्मू में। और पल्ली जम्मू में वो कैसे हो गया कार्बन न्यूट्रल? क्योंकि सारी की सारी जो भी एनर्जी है उस पंचायत में वो मिलती है सोलर एनर्जी से, सोलर 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 पावर। ठीक है। यस सर। और अकेला जो कंट्री है वर्ल्ड में वो आपका भूटान है, जो कि कार्बन न्यूट्रल ही नहीं, कार्बन नेगेटिव है आपके लिए, क्योंकि ज्योग्राफी में आप, इसलिए आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये हो गया। और आपका क्या था जिसमें मैं बताना चाहता था? हाँ, जॉइंट पैनल पार्लियामेंट का इंट्रोड्यूस हो गया बिल, वन नेशन वन इलेक्शन। लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ और उसके लिए जॉइंट पैनल बनाया गया है। पार्लियामेंट का जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी का जो पैनल होता है वो उसे देख रहा है, उसकी लेटेस्ट पोजीशन ये है। अब आप न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ते हैं? सर इंडियन एक्सप्रेस। इंडियन एक्सप्रेस। एक और ऐड करना है बिना भूले, जो कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हो। इकोनॉमिक्स में, क्योंकि आप आईआरएस में हैं ऑलरेडी और इनकम टैक्स में हैं, तो उससे तो इकोनॉमिक्स का तो अब आ भी रहा है, टाइम आ रहा है। कैसे आ रहा है कि बजट सेशन आ रहा है, इकोनॉमिक सर्वे भी प्रेजेंट होगा, सारा कुछ होगा, वो आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो, वैसे तो कुछ भी पूछ सकते हैं, आप तो जानते हो, इंटरव्यू दे चुके हो, अच्छे इंटरव्यू में आपके मार्क्स आए हैं, आज का भी परफॉर्मेंस आपका अच्छा हुआ है, लेकिन अच्छे की कोई लिमिट नहीं है, हमें और अच्छा होना यस सर। है ना। हम्म। वन कितने बताए आपने? 193। 193। 193, तो और भी अच्छे लाने हैं। ठीक है, हमारा रिटर्न अच्छा हुआ है और हम ऊपर उठेंगे, अपना फर्स्ट चॉइस मिलेगी, जो भी कैडर की है, जो भी है, फर्स्ट सर्विस मिलेगी। ठीक है ना, तो उसको और ऊपर ले जाना है। अब तो रिटर्न वाला आप कह रहे हैं अच्छा किया है, तो इंटरव्यू में और भी बढ़िया मार्क्स आपको लाने हैं। तो उत्तराखंड का ये देख लीजिएगा, यूसीसी का, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो नोटिफाई हुआ कि नहीं हुआ। इसको मकर संक्रांति को मैं नहीं जानता, मैंने पढ़ा नहीं है कहीं। मैंने नॉर्मली वो, और उस दिन का इंटरव्यू, वो सॉरी, अखबार पढ़ना नहीं भूलना है। बिल्कुल सर। इकोनॉमिक सर्वे, बजट में तो थोरो रहना है। इनकम टैक्स बिल जो होगा, पेश होगा, वो जब तक हो जाएगा थोरो रहना है, 13 तक। आपका तो 13 के बाद है इंटरव्यू, कौन सी डेट को होता है? 17 फेब को है सर। 17। तो जब तक तो फर्स्ट फेज खत्म हो जाएगा। इनकम टैक्स का वो जरूर देखना अच्छे से। सर। ठीक है ना, क्या है बिल में? यही तीन तीन चीज मेन होंगी। सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसीजर होगा, रिडंडेंट जो प्रोविजंस हैं वो हटाए जाएंगे, और उसको उसके यूजर फ्रेंडली, ये इनकम टैक्स पेयर्स फ्रेंडली बनाया जाएगा। ठीक है ना। और भी इनकम टैक्स से रिलेटेड क्या क्या हो सकते हैं, इकोनॉमी से रिलेटेड क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आप आइडेंटिफाई करेंगे और उन्हें अच्छे से प्रिपेयर करें। ठीक है, कोई क्वेश्चन आपका हो तो बोलो। सर लाइक मेरा तो एक ही डाउट है कि एक्चुअली मैं ट्रेनिंग के अंदर हूँ अभी, हम्म। और ट्रेनिंग कितनी हेक्टिक होती है मॉर्निंग से इवनिंग तक, लाइक मेरे को बेरली टू कोई थ्री बात नहीं, जो भी टाइम आप निकाल सकते हैं, मैं जानता हूँ ट्रेनिंग हेक्टिक होती है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन जो भी टाइम निकाल सकते हैं बढ़िया है। सर। लास्ट डे रिलैक्स रहना है, उस दिन का न्यूज़पेपर पढ़ना नहीं भूलना है, इकोनॉमिक्स का पेपर ऐड करना है, बिल्कुल सर। जो अपने उसके साथ बाकी जो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो कंटिन्यू करो, उसको बढ़िया है, और एक ऐड करो। श्योर सर। ठीक है, आई ठीक है थिंक यू सर। विल डू वेरी वेल, और आपको फर्स्ट चॉइस ही मिले। लेट्स होप। जी सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।